Good morning, dear students. How are you all? Yes, dear students. I am Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi. Again, we are here to discuss about a new chapter, and this is our chapter number 2, a 5-year plans in India, goals and achievements. So, my dear students, yesterday successfully we have completed chapter number 1, and today we are going to start chapter number 2. So, let's proceed for the topic. Yes, beta, here is chapter number 2, and the chapter name 5-year plans in India, goals and achievements. So, after studying this chapter, we are able to understand, you will be able to understand the following points and what are the learning objectives. First is, what is economic planning? Second, need for planning in India. Third, directive planning and comprehensive planning. It means both are the different type of planning. Types of economies: capitalist, socialist and mixed economy. I hope you all know about that. In the 11th class we have studies about all three types of economies. Next is long period and short period goals of planning in India. Long period and short period goals in India. Then after, features of economic policy pursued under planning till 1991. It means आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी प्लानिंग कमीशन शुरू हुआ, जो भी प्लानिंग शुरू हुई, तो टिल 1991 तक क्या हुआ, उसमें सक्सेस, उसकी सक्सेसेस, उसके लिमिटेशंस, फेलियर्स, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर बिकॉज आफ्टर 1991 न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग वो started. Then after successes, it means achievements of the planning, what was the achievements, and failures along with the success. और हम ये भी पढ़ेंगे कि what was the failures that we have not successfully attained. So my dear students, here are the topics that we will discuss in this chapter. So we will start with what is economic planning. First is meaning. What is economic planning? So dear students, planning, as you know, plan for the future एक्शंस, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उनके लिए प्लान करना ही प्लानिंग होता है. सो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज in different development activities in accordance with national priorities. It means as per the national priorities, जो हमारे देश की ज़रूरतें सबसे ज़्यादा हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम पहले सेटिस्फाई करेंगे उन एक्टिविटीज़ को. देन आफ्टर बाकी जितनी भी बची उनको सेटिस्फाई करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज प्रायोरिटीज़, distribution of countries resources is known as economic planning. Okay dear students, so what is commission? Yes, in India the idea of economic planning become a reality with the setting up of planning commission in 1950. 1950 में 1947 द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हुए. 1950 में डिसाइड हुआ कि देयर शुड बी सम प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्शंस. जो भी हम फ्यूचर में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, जो भी काम करेंगे, वी मस्ट प्लान अर्लियर. हमें उसके बारे में पहले ही सोचना होगा. ओके, सो but in February 2015, 1st February 2015, it has been replaced by नीति आयोग. जो नीति आयोग है, अब उसने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह नीति आयोग है. एंड नीति आयोग is making a policies to accelerate the pace of GDP को बढ़ाने के लिए, उसके पेस को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सलरेट करने के लिए अब नीति आयोग उसके लिए काम कर रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन लर्न दैट इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज़. इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग है, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज़, देश की ज़रूरत के हिसाब से. यस, सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाई वी नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया. हमें इंडिया में प्लानिंग की ज़रूरत क्यों हुई? वाई वी नीड? सो इंडिया, बेटा, एज वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज आर इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड. द प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो, डेवलपमेंट वॉज वेरी लो. एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ओके, इट मीन्स आपकी फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर,
everything was backward. So obviously we need something to plan for the development. So India inherited from the British a backward and stagnant economy. It means हमें ब्रिटिश ने backward और stagnant economy दी. Stagnant means there is no development and backward means very slow development. It was backward at the level of output and productivity were low. अपने देश में प्रोडक्टिविटी का लेवल कम था. GDP at that time very low, okay, as compared to the developed nations. And beta, economy couldn't be left to the market forces of supply and demand. So to trace the path of growth and development, India need a big push for investment and supported by the government. Hence our resources to be planned economically. तो इसीलिए हमें, क्योंकि बैकवर्ड इकोनॉमी थी, प्रोडक्टिविटी कम थी, जीडीपी लो था, सो रिमूव ऑल द बैरियर्स टू कॉम्बैट विद ऑल द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, to fight with problems, we need some plan. So these are the economic planning. So India needs really economic planning at that time. Yes. So next is directive planning and comprehensive planning. So what is directive? Directive planning means it is a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand, so that the system does not go wayward from the state of equilibrium. ओके, इट मीन्स देर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट. गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है. फ्री प्ले है. मार्केट फोर्स अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री है. ओके, तो इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिव द प्राइवेट सेक्टर्स विद रिगार्ड टू अ सेट ऑफ डू और डोंट डूज. इसमें प्राइवेट सेक्टर्स बिल्कुल फ्री है टू डिसाइड दैट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. ओके, और वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए रेडी है. सो डायरेक्टिव प्लानिंग परसुएड to the capitalist economy which is controlled by the market forces, which is controlled by the private entities. बस there is no role of government का उसमें कोई participation नहीं होता. ओके, सो ये टोटली प्राइवेट इकोनॉमी है. एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें गवर्नमेंट खुद प्रोसेस और डेवलपमेंट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है. तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग परस्यू टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट मीन्स सेंटर प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है. इसमें प्राइवेट और पब्लिक बोथ सेक्टर्स आर को एग्जिस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं. Okay, so next point is here, what is free play of market forces, mean how you identify the free play of market. So dear students, here are the few characteristics. It refers to the situation when the government of country doesn't interference with the market forces. में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. फर्स्ट, and second, producers are free to decide what to produce, how to produce and for whom to produce. इसमें producers बिल्कुल free हैं decide करने के लिए. and yes बेटा, simply producers always produce those goods which reveal the high profit. वो high profit के लिए काम करेंगे, अपना profit maximize करेंगे. okay, a capitalist economy, free force means a capitalist economy or a directive planning. okay, so today with the beginning of this chapter, what we have complete the meaning of economic planning and which ayog is take place या changes या replace the planning commission of India. Then why we need planning in India. Then what is directive and comprehensive planning, there are difference we have studies. And what are the features of free play of market forces. So I hope you understand today's point. Yes dear students, so tomorrow we will discuss for the further topic. So stay blessed, stay safe at home.